narrative simply means a story. Sometimes we say that don't build up a narrative which is not true. Or sometimes we say that it is all about narratives, the truth is something else. जैसे वेस्टर्न मीडिया में हमें नरेट किया जाता है एशियन पार्ट को इन अ सर्टन लाइट कि हम नेगेटिव डिस्प्ले होते हैं. मे बी वी आर नॉट नेगेटिव एट ऑल, मे बी वी आर नॉट 100% negative, but the narratives that are made are very problematic. Nowadays there is a video going viral in which there is a Molvi and he's actually praying and a cat is there and it's trying to sit on his shoulder and then it tries to kiss him. So there is a meme going around in which the narratives by the Western country is like we are terrorists, we have dadi and we have hijab and we have guns and everything, but that narrative is shaken by this particular instance where an animal which are very much attracted to humans which are good. Animals हमारी तरह मैनिपुलेटिव तो नहीं होते ना कि अगर बंदा इंसान डैश भी हो बुरा भी हो तो भी उसके पीछे पीछे जाए. इंसान एनिमल उसी इंसान के साथ को रिलेट करता है, कॉरस्पॉन्ड करता है जो काइंड होता है. सो वो सी नैरेटिव्स में शेकीनेस आती है. सिमिलरली अब इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट हू क्लेम्स दैट they have always attended the classes, it's their narrative, but the reality could be something else. Fortunately enough, there are CCTV cameras in the class and it can be definitely cross-checked if they are. So narratives could be built, narratives could be narrated. Narrated would mean sunana, bayan karna, kahani ko sunana. Have you ever read a short story? Yes. What does a short story have? What are the elements of a short story? हाँ, अफसाने फॉर एग्जाम्पल क्या कुछ होता है उसके अंदर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है स्टोरी? Thematically it could be loaded with social phenomena or social ethical dilemmas or some moral lesson is there. So thematically a story would have a lesson to share. What else? If we talk about structurally, can you comment on the structure of a short story? जहेज मैम उसमें ये था ना कि एक स्टार्ट उसका ये था, उसका बड़ा वो था कि जो आपके स्टार्ट ऐसा था कि एक बाप होता है वो काम वगैरह कर रहा होता है और फिर उसकी बेटी की शादी होती है और वो लोग आके बातें वगैरह करके जाते हैं कि कैसा खाना कहते हैं, लेकिन उसके पीछे वो बता रहे होते हैं क्या बताते हैं. वो उसकी बेटी सोचती है कि वो भी दिन थे जब मेरा बाप क्या करता था कि चटनी के साथ बैठ के रोटी खाता था और आज ये लोग बैठ के उसी के बारे में बात करें सिर्फ वो जहेज पूरा करने के लिए कि मतलब अपनी बेटी का जहेज पूरा करो लोगों को खाना. Well, that's again the theme of the story. I'm talking about the structure. If we compare it with the novel, it is usually shorter. A short story could be 500 words to 3,000 or 6,000 words, and sometimes it can go on to more than that. It depends on the type of short story. As you know, there are different genres available. When I say genres, I mean to say different versions and realities available. Some could be horror stories, some could be comedy, some could be sci-fi action, some could be romantic stories. So these are genres in which variations are available on the basis of themes, feelings, descriptions and etc. Other than this, we have characters in a story. Usually characters, they talk to each other. There could be different types of characters and each type of a character could have different shape to it. Some characters are positive, some characters are negative, some characters are very neutralized, they have no say, they are just there in the background, right? There are two types of characters majorly. One is major characters and minor characters. Major characters are those characters which usually change. In the starting point of the story they are different, but by the end of the story they change. They have this revolutionary, provocative change in their personality. For example, if we talk about that drama, you must have heard about it if you have not seen it or watched it. It's called Mere Paas Tum Ho, in which that female character, it changes from the beginning till the end multiple times. So that is a major character. But if we talk about Rumi, the kid, or the teacher, the female teacher who teaches Rumi, both of them are minor characters because they stay the same. They start with the points, they have the same flair and the shades, and they end with the same shades and the flares.
If you talk about that negative character or the other man, he changes as well. He commits with Mehwish that I'll take care of you, I'll marry you, but he doesn't do that, and then he flips back to his first wife. So he is a fluctuating, a major character. What about Danish? Is he a major character or a minor one? Remember, major characters they change, minor characters they don't. How did he change? Okay, so reluctance and resistance is there. Now within major characters you will have different types of other major characters. Some of them are round characters, some of them are static, some of them are dynamic. There are so many categorizations available. What you need to understand is there are two types of characters, major characters and minor. Major characters, they get some kind of treatment and we see a change in them. However, minor characters, they don't change, they stay the same, they are static. जैसे stagnant water नहीं होता, खड़ा हुआ पानी, they are like that. एक होता है flowing water, चल रहा है, और एक होता है खड़ा हुआ पानी. If you remember this example, you might remember that the major characters are the flowing water and the minor characters are the stagnant water. So in the short story we have themes, different flares of themes. We have characters, positive, negative, neutral, major and minor. Then we have the length. I told you it could be 500 words to 10,000 words, it depends on that. Then we can have different kinds of genres, horror, romantic, comedy, sci-fi fiction, gothic. There's so many of them. Now they have graphic narratives as well. So many things are there, right? And then we have, in a story, we have a voice or a narrator. If you talk about a narrator, sometimes the story is narrated by a third person. Have you ever seen a tableau? Yes, sir. Yes? What happens in tableau? There are characters on the stage, they perform, but then there is a narrator on the rostrum who's narrating. Once upon a time, there was this beautiful girl, Cinderella, she entered. She or he, the person who's on the dais, is a narrator. वो सिर्फ कहानी को narrate कर रहे हैं, वो कहानी का part नहीं है. Part वो characters हैं. तो narrators जो हैं story के, वो multiple types के होते हैं. First person narrator, second person narrator, third person narrator. अब वो जो dais पे जो बच्ची या बच्चा खड़ा है, that's a third person narrator. कि वो कहानी से बाहर होते हुए कहानी को narrate कर रहे हैं, not dictate. Other than that, there are short story in which the main character, which is also called the protagonist, आपको ये पता है पॉजिटिव जो मेन हीरो या हीरोइन होती है उसे प्रोटोगनिस्ट कहते हैं, और जो विलन होता है उसे एंटागनिस्ट कहते हैं. प्रोटोगनिस्ट की स्पेलिंग है PROTAGNOIST. प्रोटोगनिस्ट, एंटागनिस्ट. ANTOGNIST. Anti से आपने याद रखना है, anti means something negative, right? A counter attack or something. Protagonist and antagonist. Protagonist is the main hero. For example, इस मेरे पास तुम हो में protagonist दानिश है और antagonist वो शमीर या शहवार या जो भी है, वो दूसरा विलन है. इसके साथ आप लिख सकते हैं एंटागनिस्ट विलन होता है और प्रोटोगनिस्ट हीरो होता है. Yes, I was coming to that. Sometimes the supporting actors or supporting characters are so strong that they overshadow the hero and they become a co-protagonist. Somehow the story keeps on shifting on one person to the other, then going back to the first and going back to the second, again and again. This is the modern type of short story, right? Modernists, they keep on experimenting with the structure of the story. Nowadays, the dramas or the series that we watch, we have so many characters which are the protagonists. I'm watching this show called 911, and this is its 6th season, and within each season, they shift to each character. There are 17 characters within the show, and each one of them are highlighted on the same space
and pace. It's not like that one character is always in the shadow. Sometimes they are in the shadow, but they are brought in the मेन स्ट्रीम एज वेल. तो वो जो करेक्टर्स हैं वो शेडो में जाते हैं लेकिन मेन पे भी आती है. यानी 17 के 17 करेक्टर्स को डेवलप किया गया. नन ऑफ देम आर स्टैटिक और माइनर करेक्टर्स. ऑल ऑफ देम आर मेजर करेक्टर्स. हाउएवर with those 17 characters, बाकी जो characters attached है, be it their wives, husbands, children, immediate family, extended family, वो background में आ जाते हैं. लेकिन वो 17 characters fully developed है. So that is very experimental. That cannot be a short story, of course. That is not even a novel. It's more than that, right? तो इस तरह से experiment हो सकता है लेकिन वो बड़े advanced level पे होता है. What we are going to do, we are going to look at some short stories, very easy short stories, so that we understand the mechanisms that are involved in a short story. So far so forth we talked about themes, characters, voice, narrator, protagonist, antagonist, major and minor characters, and then we talked about genres such as negative, horror, gothic, comedy, romantic, and etc. Other than this, what do you think a short story could have? What else could be there? और क्या हो सकता है शॉर्ट स्टोरी में? नो आइडिया. जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि थीम्स में यूजुअली देयर इज़ अ पर्पस. सो यस, शॉर्ट स्टोरीज़ का डेफिनेटली या किसी भी किस्म के क्रिएटिव राइटिंग का कोई ना कोई पर्पस होता है. पर्पस, द बेसिक पर्पस नंबर 1 इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग masses. ठीक है, कि जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में कल्चरली बात की जाए, it's common for a man to get a second wife, third wife, or a fourth wife, having affairs as well, having illegitimate children as well. But it's not common in our culture seeing a woman leaving a husband and getting into a relationship with a man without getting married to him. हमारे लिए ये टैबू है, हमारे लिए ये utmost लेवल का अनबियरेबल, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है. लेकिन जैसे ही जनरल रोल रिवर्स होता है, वी आर ओके विद इट. ठीक है, कोई बात नहीं. आगे देखिए, काम तो दोनों तरफ से गलत है ना. रॉन्ग इज़ रॉन्ग, बट जेंडर की वजह से हमारे में चेंज आता है. इन वेस्टर्न कंट्रीज there is some kind of a balance in it. If a man is infidel, so is the woman. They are very much aware कि अगर शोहर ने 2 नंबर की है तो मैं भी कर सकती हूँ, and I shouldn't be very guilty about it. यहाँ पर पाकिस्तान में it's common that a woman, if she is cheated on, she is supposed to take it on. She is supposed to let it go. बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, इज़्ज़त के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको ये एक्सेप्ट करना है और वो कर लेती है. In Western countries, it's very unlikely, very unlikely. There was this Hindi film called Thappad. Have you seen it? Okay, in that movie, what happens is that there is a struggling couple of a woman and a man. The man is throwing a party of a success or something, and all of a sudden he gets this call which tells him that he has been demoted to some lower rank or something. And the wife is very excited because she knows that he's got a pay raise, he's got a very good designation. तो वो flaunt कर रही होती है. She's flaunting everyone where my husband is this, my husband and that. तो वो हंसी खुशी अपने husband के पास पानी लेके आती है या drink लेके आती है. I don't remember क्या लेके आती है. Because the man is so frustrated, he's educated, she's educated, she left her career for him in order to make this house, in order to make him. सब कुछ किया और वो बंदा इतना बुरा नहीं है. बंदा इज़ अ नाइस पर्सन, बट इन दैट मोमेंट व्हाट ही डज इज ही स्लैप्स हर इन फ्रंट ऑफ द एंटायर पार्टी एंड शी इज़ परप्लेक्स्ड व्हाट टू डू. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. देखिए, आप एक पार्टी थ्रो करते हैं, आपके लव्ड वंस, आपके करीबी आपके पास खुशी खुशी आते हैं. उन्हें नहीं पता कि आपको एक कॉल आई है जो कि प्रॉब्लमैटिक है, और अगर आई भी है दैट डजंट गिव यू द लाइसेंस टू स्लैप समबडी in the open. They still love each other, but that crack, एक वो जो ट्रस्ट आज थप्पड़ मारा है, कल को नौकरी से निकाल दे तो पता नहीं गला ही काट देगा. सोच तो आती है. तो वो जो है वो अब उस लड़की को सब प्रेशराइज करते हैं. थप्पड़ी तो है, क्या हो गया,
अब अगर रोल्स रिवर्स होते, फीमेल ने थप्पड़ मारा होता, डू यू थिंक 60% की चांसेस होते कि वो आदमी उस औरत के साथ रहता? आई डोंट थिंक सो. अनबिलीवेबल. उसने कहना है था बीबी सामान चुको तो अभी चलो, डोंट कम बैक, डोंट शो मी योर फेस अगैन. सो व्हाई इज अ वुमन सपोज्ड टू टेक इट एंड नॉट अ मैन? आई एम श्योर देयर आर मेन जो इस तरह की अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं जिसमें वुमेन कुड एक्चुअली हिट देम और वो उसको रखना चाहते हैं क्योंकि फैमिली प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, ऐसा है लेकिन बहुत रेयर है. तो यू सी क्रिएटिव राइटिंग में आप अपने करेक्टर्स को ये सब फ्लेयर्स दे सकते हैं, वो शेड्स भी शोकेस कर सकते हैं जो आपको रियल लाइफ में नहीं दिखाए जाते. जैसे ये मेरे पास तुम हो वाले राइटर ने दिखाने की कोशिश की कि ऐसा होता है, औरतें भी छोड़ के शादी जाती हैं, इट इज़ कॉमन. लेकिन आपने रिएक्शन देखा था लोगों का? ऑफ कोर्स आप टीवी नहीं देखते, आई डोंट नो आप लोग क्या देखते हैं. रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैं आपसे शेयर करूँ वो भी नहीं पता, न्यूज़ भी पता नहीं है और टीवी भी पता नहीं है. आई डोंट नो हाउ डू आई ब्रिंग दी यू नो एग्जांपल्स फॉर यू गाइस, बट देन अगैन साथ साथ मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा. तो दैट्स ऑल आई कैन डू. तो हर किस्म के शेड्स को आप शोकेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ माई टीचिंग करियर, दैट हाउ इट इवॉल्व्ड. वो भी एक कहानी की सूरत में शोकेस की जा सकती है. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज नॉट दिस डिफ़िकल्ट टू लैंड अ जॉब. इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था बिकॉज देयर वर लेस पीपल एजुकेटेड और मे बी लेस पीपल विद डिग्रीज. एजुकेटेड तो कोई भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं था और अभी भी नहीं है. मैं नहीं मानती हैविंग अ पीस ऑफ डिग्री डज नॉट मीन दैट यू आर एजुकेटेड. पीपल आर सो they don't have the basic courtesy towards other people and that is what we are lacking. Do you agree? कर्टसी की कमी है, बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है और उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि वी आर आफ्टर वर्ल्डली स्टफ. हमें दुनियावी चीज़ें चाहिए. ऑल्दो आई एम नॉट सुपर रिलीजियस, आई वोंट कंसिडर माई सेल्फ और कैटेगराइज माई सेल्फ इनटू अ प्योर यू नो जो फॉलोअर होता है जैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ तो स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, कुछ तो थोड़ी सी इंसानियत ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, लेकिन वो ख़त्म होती जा रही है. तो क्रिएटिव राइटिंग में आप ये सब शोकेस कर सकते हैं. यू सी वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड ऑल ऑफ देम कुड बी शोन, डिपिक्टेड, नरेटेड विद इन वन स्टोरी. तो पर्पसफुल हुआ राइटर. हर किस्म का राइटर पर्पसफुल ही होता है. एकेडमिक राइटिंग हो, टेक्निकल राइटिंग हो, उसका पर्पस होता है. पर्पस के बगैर तो हम बात करते ही नहीं. आई होप यू अंडरस्टूड कि एक शॉर्ट स्टोरी में क्या कुछ होता है. टुमारो आई विल ब्रिंग अ शॉर्ट स्टोरी, we'll read it and then we'll try to identify. I'll try to look for only one page or two pages कि वो जितनी छोटी हो सके हम उसको analyze करें. Later on I'll announce your assignment based on review writing. तो short story मैंने आपको पहले ही बता दी, जबकि दूसरी तरह था, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट स्टोरी की पहली अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप रिव्यू राइटिंग कर पाएंगे. ठीक है, तो कल मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊँगी. इफ़ वी हैव टाइम वी कैन एक्चुअली लुक एट इट राइट नाउ, but I don't have the story. Let me see. Any questions? No questions?